students, myself Arpana Grover, Senior Faculty Member of English and Informatics and Consortium. Now I welcome you all to again the editorial section of English. Now students, we have completed the editorial 1, now it is the editorial 2. So basically अभी आपको मैंने last time पे बताया था कि when you are following my lectures आपको पता चला होगा कि we are basically what we are planning to do is कि हम जब next year 2021 में CLAT में बैठें तो हमें ये ना लगे कि हमें comprehension करना नहीं आता. How to attempt the comprehension and what techniques, what strategies should be there to attempt a comprehension are fully discussed in these videos. So these videos will be definitely very helpful for you people. अगर आप CLAT 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन्हीं वीडियोस को अगर आप फॉलो करें तो उसके बाद आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है बिकॉज व्हेन आई एम पिकिंग द एडिटोरियल्स आई एम पिकिंग दीज एडिटोरियल्स फ्रॉम द लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स. एवरी डे जब भी न्यूज़पेपर आता है देन आई पिक अ एडिटोरियल फ्रॉम दैट article or editorial and give you the latest thing, right? So today I have picked the editorial from Indian Express and we'll be discussing the editorial. And आज का editorial is really very interesting and many of you might be doing the same thing. That is why I picked the editorial according to you teenagers, that is video games, right? हर एक बंदा वीडियो गेम्स खेलने के लिए बहुत ही लाइक यू कैन से एक नॉस्टैल्जिया सा है कि यस वी हैव टू प्ले वीडियो गेम. कुछ थोड़ा सा बैठे चलो पबजी खेल लिया, राइट? सो टुडे वी विल बी डूइंग एन एडिटोरियल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस रिगार्डिंग वीडियो गेम्स ओनली. सो आई थिंक सो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा और आपको समझ में भी अच्छा आएगा बिकॉज ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो आई वेलकम यू ऑल टू द एडिटोरियल. सो एडिटोरियल 2 वी वर डिस्कसिंग. So firstly पहले तो हम जैसे हम पहले करते हैं स्टार्ट फर्स्टली लेट्स रीड द एडिटोरियल फर्स्ट. उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चंस पर. पहले तो मैंने आपको बताया कि पढ़ना कैसे है, साथ साथ में कीवर्ड्स मार्क करने हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ यू. जब भी हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं वी मस्ट मार्क द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स व्हेनेवर वी आर रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन. हमारे पास दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम कि अब दोबारा वापस आएंगे कीवर्ड्स देखने के लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बियॉन्ड यूजिंग nostalgia as a blunt marketing technique, that is a nostalgia. What is a nostalgia? What is a nostalgia? Right? किसी चीज की बेइंतहा आदत होनी, nostalgia से हम किस चीज के बिना रह नहीं सकते, अंदर से तड़प होती है. That is a nostalgia. So the author is saying that the marketing techniques, nostalgia is that thing which the marketers are using for its marketing techniques, and video game as a medium is a particular appeal to the players longing for the past. And obviously video games उसी एक nostalgia के अंदर ही आता है. जो लोगों को video games खेलने की आदत है they can't avoid everything. The players are appealed every time और they are having a nostalgia every time. Yes, मोबाइल दिख रहा है या लैपटॉप दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, let's start a video game. So this is called as nostalgia. An author, that is psychologist Clay Rutilage, a psychologist professor at North Dakota State University, who's made as a career out of studying nostalgia, he said video games lends itself to a feeling more than other mediums. That means किसी और मीडियम से ज़्यादा वीडियो गेम्स इम्पैक्ट करता है उस माइंड को बिकॉज ऑफ इट्स इमर्शन फैक्टर. वाई? बिकॉज इसका इमर्शन फैक्टर जो है माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट अपील्स मेजरली द टीनेजर्स. गेम्स हैव अ पोटेंशियल टू बी मोर इमीडिएट एंड पर्सनल देन rather than other forms of entertainment. So आज की डेट में अगर हम देखें तो he is saying that the games have a potential for the immediate and personal penetration in the mind of people. So immediate and personal, make it very clear कि वो immediate भी है और personal भी है, like, and the people are moving socially away from the society just because of these games. Players aren't remembering the time they watched a hero defeated a bad guy. That means उनको कुछ याद ही नहीं है. The players who are playing the video games, they are not जैसे जो मूवीज में होता था कि हाँ भी एक विलन है, एक हीरो है, the hero is defeating a bad guy. They just remember the time they beat a bad guy because they have to वही चीज जो एग्रेशन है गेम्स में वो उनके अंदर आ जाता है, राइट?
So they just don't remember the movies, they just remember the time they beat the bad guy जो वो गेम खेल रहे हैं. Jamie Madigan, who's written extensively on the psychology of the video games, points out that the nostalgia tends to be strongest when people are reminiscing about socializing. So that means nostalgia tends to be strongest in the people when they are like wondering about socializing. Gaming has always had a communal component to it. Gaming has always had a communal component. Communal, market is communal, representing a community, right? And it's only more so now with rise of let's play videos on YouTube. Normally हम क्या करते हैं communal हम क्यों बोला गया why the author is saying here as a communal component because जब हम खुद भी game खेलते हैं we socialize with other people also. Yes, come and play with us. So now it's become a communal game. And there is basically, and it's only more so now that the rise, let's play video on YouTube. Let's play is a communal type of a video where you add people by inviting them, giving them the invites. So a game becomes more or less a communal game, irrespective of कि ये नहीं कि आप अकेले खेल रहे हो. You're playing of you're doing your own, whatever you're doing to yourself. You are asking your friends also to join. The site most subscribed channel for nearly 2 years has been Paid, who is known as a game walkthroughs and like he's a person who basically subscribed this channel for the nearly 2 years. Last year, Amazon paid more than $1 billion to acquire Twitch. Now, what is Twitch? To acquire Twitch, a company whose sole purpose is allowing the people to watch other people's play video games. The Atlantic's Robinson Mayers wrote. That means Amazon ने सिर्फ $1 billion इसलिए खर्चे एक सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए acquired Twitch, a company, it was a Twitch, जो कि सिर्फ यही एनालाइज करती है कि कितना लोग टाइम स्पेंड करते हैं अपना in playing games. That means game playing is now a marketing strategy for all the companies who are in video gaming, right? So this is all about the video games, जहाँ पर कि उसने क्रक्स क्या है इस पैसेज का कि उसने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि वीडियो गेम्स जो हैं वो आज की डेट में हर एक को नॉस्टैल्जिक कर रही हैं. दे आर मोर eager to play games, and more or less the games now have become not a social, it has become a communal person. It has become a communal games. अगर कोई एक बंदा खेल रहा है तो उसके साथ पूरी कम्युनिटी खेल रही है, उसके फ्रेंड्स खेल रहे हैं, राइट? एंड आज की डेट में हर एक बंदा ये नहीं है, एवरी पर्सन इज जस्ट थिंकिंग यस कि वो मूवीज का टाइम था कि बैड गाय है ना, a positive thing and a negative thing. A negative thing is always overcome by a positive thing, right? And now here the person is always thinking how to beat that person. He's just going for a negative thing rather than a positive thing. So in this manner, the author means to say that earlier when there were the people used to, the children used to with the movies, they are more concerned कि एक hero है और एक villain है. Villain को hero overtake कर लेगा, उसको मार देगा. That means there is an end to a bad thing. But now due to video games, now you are just in focusing how to beat that person, right? So this is the crux of the passage. Now let's do the questions related to this passage one by one. So the first question, which of the following is true about the video games? They use nostalgia to appeal the gamers. They are a part of multi-billion-dollar industry. They have a potential to be relatively more personal, and Super Mario is a video game. So accordingly, हमने अभी पूरा passage पढ़ा. So true about the video games. So most probably 1 and 2, 2 and 4, 2 and 4 तो नहीं है Super Mario. 1 and 3, 1 and nostalgia to appeal the gamers. They have potential to be more personal. Most probably it is. So answer is 1 and 3 because एक तो वो नॉस्टैल्जिया की बात कर रहा है, ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट द नॉस्टैल्जिया. सो 1 and 3 इज अ करेक्ट आंसर. दे यूज नॉस्टैल्जिया टू अपील द गेमर्स एंड they have a potential to be relatively more personal, right? Because
अभी हमने ये लाइंस, दोनों लाइंस हमने पैराग्राफ में पढ़ी हैं, सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सो 1 and 3 इज अ आंसर. करेक्ट आंसर इज अ सी, 1 and 3. So second question he says which among the following are the names of the individuals mentioned in the passage. अभी हमने जब पैसेज पढ़ा था तो इनमें से कौन से नाम उस पैसेज में हैं? पी डायपाई, क्ले रॉटलेज, रॉबिन्सन मेयर, जेमी मेरिगन. तो ऑब्वियसली हमने 3 नाम तो बहुत श्योरली पढ़े थे, 1, 2 और 3. So 2, 3 and 4 is a correct answer. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया. अभी हमने बहुत बात की नॉस्टैल्जिया के बारे में. सो इट इज अ डीप एग्रेशन, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, डिस्ट्रैक्शन और नन ऑफ दीज. तो अभी हमने, एज वी हैव रेड द पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज नॉस्टैल्जिया मीन्स अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, किसी की इमोशनल लॉन्गिंग टू डू दैट थिंग. सो करेक्ट आंसर इज बी, नॉस्टैल्जिया मीन्स सेंटिमेंटल लॉन्गिंग. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई गेमिंग इज कॉल्ड एज इमर्शन फैक्टर. तो ये वर्ड हमने एक पैसेज में पढ़ा है, इमर्शन फैक्टर. इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया भी है. व्हाट इज इमर्शन फैक्टर? गेम्स हैव अ पोटेंशियल टू बी मोर इमीडिएट एंड पर्सनल देन अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. ऑल द एज ग्रुप्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड गेमिंग. पीपल फील रिलैक्स्ड एंड नन ऑफ दीज. So obviously, according to the passage, the first answer, that is a game, have a potential to be more immediate and personal than other forms of entertainment, is correct answer. So correct answer is A, right? So this was the second comprehension. Now, dear students, this is all about the second editorial. We will be back tomorrow with you with the editorial number 3. Again, I think so today's editorial was very, very interesting upon the games, and be away from the games. अपने studies पे ध्यान दीजिए. And for the next further video lectures, please do subscribe our video channel, that is Course Edu Informatics, for the further videos. Always, obviously, log on to our website informaticsonline.com, where you will find your CLAT previous year's papers. So these are certain links you can follow for our further joining us through various mediums, through Facebook, through Instagram, through our website or Course Edu app, right? So this was all about it. So for the various free papers also, you can download our app, Course Edu. It will be very, very helpful for you, being a 2021 aspirants, CLAT aspirants. Subscribe our video channel, Informatics, Course Edu Informatics. That will give you a deep immersion, obviously, in the CLAT 2021, where not only of English, you will be finding the various lectures of law, aptitude, legal reasoning, legal aptitude. So this video channel, that is YouTube channel, Course Edu Informatics, is very, very helpful for the CLAT students. Right? So hope so you're doing well. Stay safe and keep hardworking. Thank you.